my, in fact, the entire colleague is pointing out, this has raised a lot of speculation regarding what is going to be the future for the SAD-BJP alliance. Let's also, in fact, take in some breaking news coming in. Well, as the Shiromani Akali Dal is likely to back the government on the delimitation bill, senior leader from the party, Daljit Singh Cheema, after meeting party president Sukhbir Singh Badal, has said that the party urges the government and the parliament to immediately implement the women's reservation bill and the delimitation bill. The statement comes amid political debate over the government's proposed delimitation exercise and women's reservation. Let's listen in. आज श्रोमणी अकाली दल की सारी जो सीनियर लीडरशिप है उसकी मीटिंग हमारे अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब की अध्यक्षता में जो है वो हुई है और फैसला हमने पब्लिक भी कर दिया, आपके पास भी पहुंच गया होगा। दो मेन फैसले, क्योंकि पार्लियामेंट में जो इशू पेंडिंग है उनके ऊपर विचार चर्चा की गई है, क्योंकि हमारे मेंबर पार्लियामेंट बीबा हरसिमरत कौर बादल भी हाजिर थे कि पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है जो इश्यूज पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण इशू पेंडिंग है। एक तो विमेन बिल, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल गुरु साहबान की फिलॉसफी के हिसाब से चलता है और गुरु नानक साहब से लेके सारे गुरु साहबान ने पहले ही विमेन डिग्निटी के लिए, इक्वालिटी के लिए हमेशा ही जो है संदेश दिया है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो हाउस है हमारा, उसमें भी हमने विमेन रिजर्वेशन पहले से कर रखी है। All right, let me go across to my colleague Manohar Kesri, continues to be with us. Manohar, ये senior leader का एक बयान आ रहा है सामने, जिन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिलिमिटेशन बिल और जो वुमेन्स बिल है वो इमीडिएटली होना चाहिए, अब गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए बिल। देखिए बिल्कुल All right, we seem to have some trouble connecting with my colleague Manohar Kesri on this, but remember that Akali Dal had earlier opposed the delimitation bill when the centre had first brought it in the parliament in April and had voted against it along with the opposition. The party had then described the bill as discriminatory towards Punjab. So now we are seeing a full change over here in that policy. Let me in fact go across to Mr. Neeraj Nahire, who is a political analyst. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to NewsX. A very good morning to you. Mr. Neeraj, I want to understand your observations on this speculation that is now rife that the SAD and the BJP might just revive their alliance, given that they are supporting now the delimitation bill and the women's bill, and we are looking at a 2027 elections in Punjab. देखिए निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री की एक बड़ी जीत है, क्योंकि बेसिक चीज जो है वो 2027 का चुनाव है। पंजाब में जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति और कूटनीति के तहत इस चीज को तैयार किया है और उसी तैयारी के चलते अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन की तैयारी का एक रास्ता जो था वो खोल दिया गया है। अब दोनों ही दल निश्चित रूप से इससे साफ जाहिर हो गया है कि 2027 का चुनाव मिल के लड़ने की तैयारी है। और चूंकि बेसिक चीज ये थी कि अकाली दल और बीजेपी किस चीज को लेके तैयार हों, ये एक पेच फंस रहा था, जो पेच इस परचीमन बिल को समर्थन करने का उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि 2027 में उन्हें पंजाब में चुनाव मैदान में भी जाना है। जी और मिस्टर नीरज, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे आपको क्या लगता है कि क्या एसएडी के पार्टी वर्कर्स या बीजेपी के पार्टी वर्कर्स अग्री करेंगे, क्योंकि 2020 में जब ये अलायंस टूटी थी तो मेजर डिफरेंसेस थे फार्म लॉस के ऊपर। अब क्या लगता है कि पार्टी वर्कर्स, जो ग्रास रूट वर्कर्स है, वो सपोर्ट करेंगे इस अलायंस को?
देखिए, देश में या राजनीति में बात करें, राजनीति एक संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं हुआ करता है। मुझे लगता है कि उसी चीज को देखते हुए, चूंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और सत्ता सबको प्यारी होती है, और मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ता हों या उनके नेता हों या उनके सहयोगी हों, वो सभी मुझे लगता है कि राजनीति में सत्ता पानी है 2027 में तो मान जाएंगे, और राजनीति में ये सब चीजें होती रहती है, सामान्य प्रक्रिया में आता है ये। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, अगर आप इस पे कमेंट करेंगे कि सेंटर को पहले दिक्कत हो रही थी डिलिमिटेशन बिल को लेके, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेके, और अप्रैल में एसएडी ने इसको अपोज भी किया था, बट अब पूरा चेंज हो गया इनका स्टैंड, तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये बीजेपी के लिए भी फायदा है? निश्चित रूप से पहली चीज तो हम आपको बता दें कि महिला संशोधन बिल है, वो पहले से पास हो चुका है 2023 में, वो बिल पास हो चुका। अब वो संशोधन बिल लेके आए थे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिक्के के दोनों पहलुओं को देख के चलती है, तो अगर यहाँ उनको समर्थन मिल रहा है तो पंजाब में अगर वो समर्थन देंगे, तो पंजाब में अगर समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से अकाली दल उनको बिल, चाहे वो महिला संशोधन बिल हो चाहे परिसीमन बिल हो, उनको समर्थन करना ही होगा, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में सारे और जंग में सारी चीजें जायज होती हैं। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर नीरज, with that valuable perspective. In fact, we are getting you all these updates, we are getting you various perspective as to if there can be a possible alliance between the SAD and the BJP. Remember that they had been alliance partners in 2020. Well, with that, let's have a look at the timeline of the SAD and the BJP's relation, because like I said, they have been alliance partners for quite a few years. So in 2014, the SAD remained a BJP ally during the 2014 Lok Sabha elections, and was part of the NDA government as well under Prime Minister Narendra Modi. So this is 2014 that we are talking about. Then in 2019, the SAD-BJP partnership remained intact despite differences over several issues. So differences started to arise over here, but yet they were in fact intact. This relationship between SAD and the BJP continued to remain, continued to go strong. However, then comes 2020. The relationship collapsed over the centre's 3 farm laws amid massive farmer protests in Punjab. And we remember that in 2020, there were massive protests in the Delhi NCR region as well, protests in Punjab, protests in Haryana by farmers over the 3 farm laws that were brought up by the centre, and hence the alliance collapsed in 2020. And in 2021, we got to know that after Prime Minister Narendra Modi, he announced the repeal of the farm laws, SAD said that they would not immediately return to an alliance with the BJP. So even 1 year after, when Prime Minister announced the repeal of these 3 farm laws that were the cause of the farmer protest in 2020, the SAD remained firm on their stance that they will not get back into an alliance with the BJP. Then in 2022, the SAD and the BJP contested the Punjab Assembly elections separately for the first time in decades. So in 2022, we saw that both the parties fielded their own candidates, they went on their own way, and it was the first time that both the parties were in fact contesting the Punjab Assembly elections separately. Let's also look at 2024, where talks over rebuilding of the alliance ahead of the Lok Sabha elections broke down. So ahead of the 2024 Lok Sabha elections, remember, there were talks, there were rumors, there was speculation that BJP and the SAD might try to rebuild their alliance. However, those talks also broke down in 2024. And now we are in 2026, and when asked about a possible SAD-BJP tie-up, Sukhbir Singh Badal has said that it was not the right time. So earlier
this year as well, when Sukhbir Singh Badal had been asked about if there can be a possible link up, a possible alliance, a possible revival of this relationship, he stated that it was not the right time. And now we come to the present, where when he was asked about a possible BJP SAD tie-up, we are looking at him meeting the Prime Minister right before the delimitation bill and the women's reservation bill is being implemented, and now we are seeing a change in stance of the SAD. They have supported the delimitation bill, they have supported the women's reservation bill, and in fact now speculation is rife that the SAD might revive the alliance with the BJP. So Sukhbir Singh Badal met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi ahead of the 2027 Punjab polls and voiced support for the delimitation bill. So this is the latest, this is the full timeline that we got for you, starting in 2014 when they both contested the Lok Sabha elections together as a unit, as an alliance, and now to 2026, where speculations about this alliance revival has come to the fore. All right, with that, we are shifting our focus now to Jharkhand.